नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़ा करीब 3 लाख पहुंचने वाला है। कोरोना काल में पूरा देश इस महामारी से जंग लड़ रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कोरोना संकट को लेकर जाने माने हस्तियों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने अमेरिका के पूर्व विदेश उप मंत्री निकोलस बर्न्स से बातचीत की है। कोरोना को लेकर बातचीत में बर्न्स ने इस बात को खारिज कर दिया कि चीन कोरोना वायरस की लड़ाई जीत रहा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G20 में एक साथ काम करेंगे और कोरोना से निपटेंगे। Why do you think that in this COVID crisis, and I say this for most countries, including India and the United States, why do you think there has been almost no cooperation? I think you and I have talked about this before. It's a terrible, terrible disappointment to me. I'm sure it is to you. You know, this crisis was made for the G20. It was made for Prime Minister Modi and President Xi Jinping and Donald Trump to be working together, all of our countries, for the common global good. All of us are confronted. Every Indian American is vulnerable to this disease. And I would have thought at the beginning of the crisis, I would have predicted that countries would have put down their differences and worked for a vaccine together, or how to distribute that vaccine in an equitable and humane fashion. And it hasn't happened, mainly because Donald Trump doesn't really believe in international cooperation. He's a unilateralist. He wants America to go it alone in the world. And Xi Jinping chose to compete with Trump. And the U.S. and China at the heart of the problem here. And I hope when the next crisis comes, we'll do better to work together in a more effective way. बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने असहिष्णुता का मुद्दा उठाया है। राहुल ने यहां अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। लेकिन राहुल ने जिस अमेरिकी एक्सपर्ट के सामने ये बात उठाई, उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल के सवाल पर निकोलस ने कहा कि अमेरिका इस सब से जल्द बाहर निकल आएगा और भारत पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। The thing we share, and I think why our partnership works, is because we are tolerant systems. You mentioned that you're an immigrant nation. We are a very, very tolerant nation. Our DNA is supposed to be tolerant. We're supposed to accept new ideas. We're supposed to be open. But the surprising thing is that that open DNA is sort of disappeared. I mean, I say this with sadness that I don't see that level of tolerance that I used to see. I don't see it in the United States, and I don't see it in India. I think you've identified a central issue, at least for the United States. And the silver lining here, the good news is that we have people demonstrating all across the country in every major city in the United States this week, peacefully, on behalf of tolerance, inclusion, minority rights, all these essential issues at the core of our democracy. And I think one advantage is that we democracies have, say, over an authoritarian country like China, is that we can correct ourselves as a self-corrective part of our national DNA in India and the United States. And as all democracies, we resolve this at the ballot box in free and fair elections. We do not turn to violence. We do this peacefully. That's the India tradition that we love about India from your founding. Yeah. In the 1930s, the protest movement, the Salt March, all the way to 1947 and 48. So I take the rule that I can't comment on your country because I don't know it nearly as well, obviously, but my country, I think, will be back. We'll be back. We'll strengthen our democracy. निकोलस ने यह भी कहा कि चीन भारत और अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि वहां शासक डरपोक हैं, लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, विचारों को वहां छूट नहीं है। पूरी बातचीत के अंत में निकोलस बर्न्स ने राहुल गांधी से पूछा कि अब तो राजनीति बदल गई होगी, क्या अब भी आप लोगों से हाथ मिलाते हैं और बाहर जाते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं मास्क पहनकर ही लोगों के बीच जाता हूं, अब राजनीति बदलेगी, इस दौरान अब किसी से हाथ नहीं मिलाता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।